digital fraud, sextortion, web of cybercrime unravels. Are you and your money safe? The Jamtara Files, an India Today investigation. Have you received SMSs warning you that your power connection will be snapped for non-payment of dues? Or messages written in dubious English asking you to know your customer details for a bank? Many of us have seen messages about offers, business proposals that sound too good to be true. Messages and emails asking us to tap unverified links. Beware, cybercrime has matured. Digital criminals are more structured and innovative than ever before. Here's an India Today special investigation from Jamtara in Jharkhand, the most notorious hotspot of cybercrime in India, and now a model for e-criminals in other states and regions. An ultimatum about power disconnections. The lures of low investments and high returns. Deals that seem too good to be true. Voice messages, emails asking you to tap unverified links. And threats on sites, apps and games to expose sexual activity. The growing iceberg of digital fraud. Cyber criminals are going great lengths week in, week out to trick you, to blackmail you by the virtual hook or by crook. One of the most notorious hotspots of the craft that has inspired a Netflix series. Jamtara in Jharkhand continues to struggle with cybercrime. Our ground report, in fact, found scammers here have become more structured, innovative, and ruthless. A victim has just arrived at Jamtara's cybercrime station. Here's a complaint of sextortion. Yes, you heard it right. Sextortion. हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप पे डिफरेंट नंबर से मैसेज आते रहे और हमारे फोटो को गलत तरीके से उसको प्रदर्शित किया गया और उसके हमको दिखा करके हमको डराया धमकाया गया और कहा गया कि आप हमको पैसे दीजिए। कितना पैसा? 50,000, 20,000, 10,000, 5,000 अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर से अलग अलग तरीके से पैसा मांगा जा रहा है। कॉल करके बकायदा मैसेज लिंक भी भेजा जा रहा है। लिंक किस अकाउंट में भेजना? बहुत सारा वो अलग यूपीआई आईडी दे रहे थे कि इसमें भेजिए इसमें भेजिए, तो मैंने भेजा नहीं। Sextortion is a scam of the blackmail variety. Scammers threaten to expose their targets' explicit images if not paid. Haider Ali complained that cyber criminals used his social media pictures and videos and mapped them onto nude imagery. The scammers have been audacious. मैंने कहा कि मैं साइबर थाना में इसका रिपोर्ट करूंगा। उन्होंने कहा कि आप साइबर में रिपोर्ट कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इससे मैं डरता नहीं, वो लोग मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते। वो उसके बाद गाली गलौज भी करने लगे हमारे साथ, तब मैंने उसका फोन कट कर दिया और मैंने आज आकर के थाना में आपके तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया और कि आपके फोटो को वायरल कर दिया जाएगा। गलत किसी लड़की के साथ आपको दिखाया जा रहा था और ये आपको धमकाया जा रहा था कि आपका जो ये क्लिप है इसको वायरल किया जाएगा, वरना आप पैसा दीजिए और यूपीआई लिंक्स वो भेज रहे थे। Jamtara recorded 76 cases of cybercrime in 2021. This year, its cyber police has already registered 60 such cases till now. As risks of digital fraud mount, local businesses are taking the brunt. Many rather prefer a reverse drive to conventional transactions. हम अपना कोई क्रेडिट कार्ड यही यूज करते हैं। नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है कि कल के दिन हैक होने का खतरा है।
हम अपने पास में किसी चीज को नहीं रखते। तो कैसे करते हैं फिर ऑपरेट आप लोग? मतलब ऑपरेट या बैंक जाके चेक से या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह जो भी है वो भी एकदम लिमिटेड, अदरवाइज बैंकिंग जाके करना पड़ता है। तो कमोवेश इसी तरह से बाकी ट्रेडर्स भी करते होंगे जैसे आप बता रहे हैं? बाकी ट्रेडर्स लोग का भी वैसा ही है, वैसा ही सिस्टम है। यहाँ पर 25-30% व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। अब लोग पेमेंट लेने में कतराते हैं, या तो फिर चेक से लेते हैं या पेमेंट या डेबिट कार्ड से लेते हैं। तो ये बदनाम होने के कारण अब यहाँ के मान लीजिए बगल के कोई लोगों से या नारायणपुर जामताड़ा कहीं अगल बगल से पेमेंट देना भी चाहता है ऑनलाइन, तो लोग लेने पे घबराता है। The scammers designed their messaging to get their victims upset, curious, or anxious. Take for example a message about an imminent blackout at your home, office, or store. It's the bait to catch their target's attention. And if the potential victims fell for it and called the embedded number, they'd likely be told to install a screen mirroring app on phones or computer systems. This to allow the scammers the access they want, the data, the passwords, the account number, and codes to execute the theft. जब कहते हैं कि हम बिल जमा कर दिए हैं फिर भी हमारा क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो कहते हैं नहीं अपडेट करना होगा। उसके लिए वो कोई ऐप्स है जैसे एनी डेस्क है, टीम व्यूअर है, उसको डाउनलोड कराते हैं और उसी पर वो जो है प्रोसेसिंग कराते हैं। किसी में वो एनी डेस्क या टीम व्यूअर से जो है स्क्रीन शेयर हो जाता है। तो ये जो उसमें 10 रुपया 5 रुपया डालने के लिए बोलते हैं, तो वो उसमें पैसा डालते हैं। डालने के बाद फिर वो जो है ATM नंबर, पिन नंबर, CVV नंबर जो भी है वो प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। Authorities in Jamtara have bolstered their defenses. The local youth are encouraged to take up decent vocations. इन्फोर्समेंट पुलिस अपना काम कर रही है। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो सारे पंचायत में लाइब्रेरीज बनाई गई हैं जहाँ हफ्ते में 2 दिन क्लासेस भी लेते हैं। संडे को पुलिस वाले और वेडनेसडे को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जाते हैं। और जो पुलिस वाले क्लास लेते हैं उनका मेन जो कंसेप्ट है वो कम्युनिटी पुलिसिंग का है। वो बच्चों को जो है अपनी पढ़ाई के लिए भी गाइडेंस करते हैं और उसके अलावा कैसे क्राइम से दूर रहना है और उसके क्या नुकसान है इस बारे में भी समझाते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। Cybercrime being borderless without the need for its perpetrator and victim being co-located, digital evidence has led police from 22 states to visit Jamtara in the past few years. But the spotlight on digital fraud has expanded to other places as well. अभी तो फैल गया, जैसे देवघर डिस्ट्रिक्ट और दुमका, गिरिडीह और जगह से भी हो रहा है। मतलब संथाल वाले बेल्ट में ज्यादा है। हाँ, धनबाद वगैरह से भी हो रहा है। इस एरिया से थोड़ा ज्यादा ही हुआ है। तो अब ये लोग कहीं से भी कर देते हैं ये? मतलब कि जहाँ जो उनका हब था कर्माटाड़, तो वहाँ अब नहीं रहते? अब यहाँ नहीं रह गया, अब तो पूरा फैल गया है। बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट इतना है लगभग, और बिहार भी लोग चले गए हैं, वहाँ भी लोग ट्रेंड होकर के ये सब काम कर रहे हैं। Gaining full remote access to your devices. Simply put, scammers entice you innovatively, threaten you aggressively to take control of your digital assets. Cybercrime no longer a small crime by any means, despite protections. With Satyajit Kumar in Jamtara, Jharkhand, Bureau Report, India Today. The Jamtara digital fraud model has gone national. The cyber portal records nearly 200 complaints every day. In fact, 65 cyber criminals were arrested just after 10 days of raids across 22 cities. Here's how the cyber crime wing seems to be spreading nationally. An extensive operation by Delhi's cyber police. 10 days of raids in 22 cities across India. हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, नाम की राशि पाने के लिए आप 65 people, many of them young men under 30 years.
arrested. The infamous jamtara model seems to have spread out far and wide. The operation that began late August centered around what many of us have already encountered on our phones. Shock SMSs and WhatsApp messages about power disconnection at night. One of the latest modus operandi है जिसमें आपको SMS के ज़रिए एक मैसेज आता है जिसमें ये बोला जाता है या तो आप अपनी KYC नॉर्म्स पूरी कीजिए या फिर आपको ये बोला जाता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भरा नहीं गया और आज रात तक या कुछ समय के बाद आपकी बिजली जो घर में आ रही है वो बंद हो जाएगी। जो भी लोग बिजली यूज़ करते हैं वो एकदम से बिना सोचे समझे, उसमें एक लिंक भी रहता है, एक नंबर रहता है जिस पर आपने कॉल करना होता है, वो लोग बिना सोचे समझे उस नंबर पे कॉल कर देते हैं इस डर से कि कहीं वो बिजली बंद ना हो जाए। ये लेटेस्ट मोडस ऑपरेंडी है। The National Cybercrime Reporting Portal recorded more than 200 complaints by electricity consumers recently. When the cyber police in the national capital analyzed the digital and financial trails, they found frauds all over the country. ये कार्रवाई होती कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। दो तरीके से होती है। एक तो आपसे पैसा डलवा लेंगे इस नाम का कि जी आपका बिजली का बिल भर दिया, और फिर अपडेट करने के नाम पर आपके बिजली के बिल को आपसे OTP मांगेंगे और वो एक्चुअल में वो आपके बैंक से ट्रांजैक्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये, आपको एक लिंक देंगे और कोई एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल करा देंगे। वंस वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है तो जो भी आपकी मोबाइल पर एक्टिविटी हो रही है वो जो फ्रॉडस्टर है वो उसको देख सकता है। Investigations revealed this cybercrime syndicate involved vendors issuing mobile phone chips on fake documents, people holding bank accounts on fake documents, or poor people renting out their accounts to cheats to execute fraudulent transactions. Plus, a network of telecallers to trick electricity consumers into downloading screen sharing apps. Authorities have issued multiple advisories to the general public about the modus cyber criminals have adopted for the rip-off in the name of power bills. But the scammers seem to be steps ahead. They can pull a variety of frauds when most of us are active on multiple digital platforms. कोई नंबर ले लेंगे और एक जो DP आप लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सएप में, वो उसी सेम DP का यूज़ कर नंबर डिफरेंट होगा, आपका नंबर नहीं होगा। आपके जानने वालों को मैसेज करेंगे और कुछ इमरजेंसी दिखाकर उनसे कोई ट्रांजैक्शन या पैसे की मांग करेंगे, और क्योंकि वो फ़ोटो आपके जानकार का होगा तो आप कुछ लोग ये ट्रांजैक्शंस कर भी देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये लेटेस्ट मॉडस ऑपरेंडी है। Keep your mobile softwares up to date. Call the central helpline 1930 should you spot a scam in your smartphone. हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, इनाम की राशि पाने के लिए आपको अपनी कार्ड की डिटेल्स कंफर्म करानी होंगी। But awareness still remains the strongest firewall and the first line of defense against cybercrime. With Arvind Ojha and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today. Almost every single day, many of us watching this broadcast at this time are being sent very dangerous messages or emails or WhatsApps which could potentially lead to a cyber crime, to information being siphoned away, money being transferred from bank accounts. How should one beware? How do you prevent yourself from being scammed? Joining us to talk about A, what's happening, B, what needs to be done, and how you can fight back, I have with me on this broadcast Karnail Singh, former head of the Enforcement Directorate. With us also is Professor Triveni Singh, Superintendent of Police in the Cybercrime Department. We have Jitin Jain, one of our country's leading cybersecurity experts. Deepthi Gupta joins us, teacher, also a victim of a cyber fraud. We've got Aman Sandhu, a TV actor, again somebody who's been scammed, and Shubhangi Atre joins us from Bhabhi Ji Ghar Pe Hain, and she was scammed as well. So Shubhangi, let me start with you. You became a victim of an online fraud last month.
begin by explaining to everyone watching what happened to you, and then we'll try and dive into what others who are watching at this time should do to ensure that they don't get scammed. Shubhangi. एक्चुअली एक ऑनलाइन फैशन ऐप से मुझे कॉल आई एंड दे सेड कि बिकॉज आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं और आप शॉपिंग करते रहते हैं, सो वी आर ऑफरिंग यू फ्यू गिफ्ट्स. सो आई सेड ओके. सो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको 5000 तक शॉपिंग करना है और जब आप उसका पेमेंट कर देंगे तो हम आपको ऑप्शंस भेजेंगे और विद इन 2 और 3 डेज़ जो आपका गिफ्ट है वो आपके घर पे पहुंच जाएगा. आई सेड ओके. अच्छा, सबसे मज़ेदार बात मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जनरली we have been told that you are not supposed to click any link or you are not supposed to give any OTP or something like that. This was a new way and there were 3-4 people, like 2 girls and 2 boys, and they were like talking to me and they were guiding me. Then they asked me my previous orders कि how was it, how did you rate it, वो आपके प्रोडक्ट्स कैसे थे. सो मैंने उनको रिप्लाई किया. प्रॉपर जो उन्होंने मुझे मैसेजेस भी भेजे थे वो ऐसे ही थे कि मुझे पता चल रहा था कि वो उसी फैशन ऑनलाइन ऐप से आ रहे हैं सारे मैसेजेस, क्योंकि उन्होंने अपना लोगो भी वही डाला हुआ था. सो आई थॉट कि इट इज़ जेन्युइन और मैं सिर्फ उनके जो इंस्ट्रक्शंस थे वो मैं फॉलो कर रही थी. ऐसे ठीक है, मैं 5000 का शॉपिंग कर लेती हूँ और अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो मैं किसी और को ये वाला गिफ्ट दे दूँगी. एक्चुअली मैंने इसी इच्छा से उन लोगों के साथ बात करना कंटिन्यू किया. अदरवाइज आई डोंट एंटरटेन लाइक सच कॉल्स. तो आपको पता कैसे चला जब ये आपको सारे सवाल पूछे गए कि आप 5000 रुपीज़ की शॉपिंग कीजिए, आपको कब और कैसे पता चला कि आपके साथ ये स्कैम हो गया? Shubhangi? So yes, they asked me to buy something. जी जी. So first पेमेंट जब मेरा 5000 गया उसके बाद उन्होंने बोला नो मैम देयर इज़ सम इश्यूज़. आई थिंक आप 50 पैसा की जगह आपने 0.05 सम अमाउंट वाज देयर. सो दे सेड कि नहीं मैम एक बार और कर दीजिए, ये हम अभी आपको रिफ़ंड भेज देते हैं. एंड दे वर लाइक उनके वो कभी अकाउंटेंट से बात करवा रहे थे, कभी वो अपने सीनियर उनसे बात करवा रहे थे. तो जैसा मैंने बोला कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में था. आई थिंक इट इज़ कॉल्ड फिशिंग. तो प्रॉपर वो जिसको बोलते हैं उनके पास सारे मेरा डिटेल्स भी थे, मेरा मेल आईडी था उनके पास. तो जब फर्स्ट पेमेंट गया मेरा उनके पास, उन्होंने सेकंड पेमेंट भी मुझसे करने को कहा कि कुछ 50 पैसे का प्रॉब्लम हो गया है, बट हम अभी हम ऑनलाइन हैं तो हम अभी आपको रिफ़ंड कर देंगे. आई सेड ओके. जब वो मैंने किया तो फिर 3-4 मेरे ट्रांजैक्शंस हुए और मेरे अकाउंट से पैसा गया ऑब्वियसली. बट सेकंड ट्रांजैक्शन भी मैंने कर दिया, बट थर्ड के टाइम तब मुझे लगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग और ये जो है कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं मेरे साथ. तब मैंने उनसे कहा कि मैं आप लोगों का कॉल रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं इसकी कंप्लेन करूँगी. वेट. सो आई टोल्ड देम कि आई विल स्पीक टू कस्टमर केयर आपकी कंपनी के और मैं उनसे बात करूँगी. देन फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैम आप ऑनलाइन रहिए, हम जो भी है आपके जितना भी पेमेंट है हम आपका जो आपका अलग से चला गया है वो हम रिफ़ंड कर देंगे. मैं आपको अपने सीनियर अकाउंटेंट से भी बात करवाती हूँ. ये सारा प्रोसेस चलता रहा. एंड एक्चुअली आई वाज शूटिंग ऑल्सो दैट डे, तो आई ऑल्सो गॉट पैनिक्ड आफ्टर सम टाइम. बट तब मैंने देखा कि मेरे अकाउंट से और पैसे निकलते ही जा रहे हैं. तब फिर मैंने अपने बैंक मैनेजर को कॉल किया और उनको बोला कि अभी के अभी आप मेरा अकाउंट को ब्लॉक कर दीजिए. और लास्ट अमाउंट जो था फिर वो नहीं ले पाए. सो यस, एक मतलब पर्टिकुलर सम अमाउंट वेंट और या दिस हैपेंड. दिस इज वेरी तो मैं सबसे पहले तो ये कि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीका था, एक जो मुझे फ़ील हुआ, क्योंकि हम कई बार दोस्त आपस में कि ये लोग आजकल इस तरह से कौन कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, तो अलग अलग तरीके सुने थे, पर ये एकदम ही कुछ नया तरीका था. आई थिंक इसके लिए अब लोगों को अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम इंडियंस जनरली ऐसा होता है, फेस्टिवल्स आते हैं तो हम बहुत जल्दी गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स को लेके एक्साइटेड हो जाते हैं. बट मैं आप सबसे यही कहूँगी कि हम इतना कोशिश करते हैं अवेयर रहने की, लेकिन उसके बाद भी अगर हो जाता है तो फिर कोई भी हो सकता है. सो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का खास ध्यान रखें. Now this is very scary because
And the reason why I decided that we should do this on the Newstrack is because virtually everyone in our newsroom had somebody or the other, a friend or a relative, a mother, a father, somebody in their immediate proximity who had been conned in some fashion. And Karnail Singh, as a long-time law enforcer, you know that this is not new, but the techniques that are being deployed are increasingly more sophisticated, and this seems to be happening with greater frequency, where everybody around us seems to have been conned in some fashion or the other, or knows somebody who's been conned or has a near escape. Why do you think the frequency of such online phishing attacks or scamming attacks is going up in this dramatic fashion? These people who are doing it, particularly in the Jamtara area. Another area coming up is the Nalanda, Nawada area. Third area is from a portion of the Haryana. Now what happens is more and more people start knowing that there is a possibility of doing the fraud online. That is number one. Number two is, suppose they send or they try 1,000 people. For example, you send a phishing email to 1,000 people. There may be 3-4 people who may become trapped. Therefore, and many of the people, the small greed or with not knowing what could happen with them. For example, a call comes to somebody that your electricity bill has not been paid. Your electricity will be cut by 5 p.m. today. And the person says, I have already paid. So then says, okay, you paid. We are seeing that you paid, but it has not. Your record has not been uploaded. So I'll upload your record. And in that they ask OTP and your money is gone. I have seen this happening with some of the very educated people also. Correct, absolutely. The reason being that we need to educate people. I'll tell you two documents which are very, very important. One is issued by the Reserve Bank of India, which is called Raju and 40 Thieves. So 40 methods of the fraud have been told in that, how these people are doing fraud. Second, the Delhi police has issued recently, which is called Cyber Hygiene. Okay. It also gives the fraud, and along with it tells what should each person immediately should do. Now, let me tell you what they should do immediately. Number one is immediately they should call on 1930 phone number. This 1930 phone number is connected to the control room of all the states. And they are also connected to the banks. The person sitting there will also inform the bank immediately. That is number one should do it. The second is the person who considers that there is a fraud with him, he should immediately inform the bank. Third thing he should do is that there is a national website which is called the cybercrime.gov.in, where if the complaint is made, it goes to the concerned, the cybercrime cell of the state. And fourth, they should make a complaint to the local police. If these 4 steps are taken, there is a possibility there that the amount which has been frauded may be saved. Okay. Aman, Sandhu, you were duped of about 2.5 lakh rupees earlier this year in a cyber scam. You apparently clicked on some suspicious link. Why don't you tell us what you did, what went wrong, and then we'll get Jiten and the Superintendent of Police from the Cybercrime Cell to try and explain how people should be careful. Aman. Exactly, ये जुलाई में हुआ. So my mom आए हुए थे. So she said कि उनको थोड़ा सा कोई health issues थे. तो मैंने एक ऑर्थोपैडिक डॉक्टर सर्च कर रही थी, तो मैंने यूट्यूब से लिंक क्लिक किया और क्रिटी केयर हॉस्पिटल का नाम है, जहाँ पे मैंने गूगल से नंबर निकाल करके बात किया. तो एक नंबर पे जिससे बात होती है एंड उन्होंने मुझे सारा टाइमिंग्स एंड ऑल सब कुछ बताया कि ये टाइमिंग्स है आपका हॉस्पिटल का, तो आप किसी भी टाइम विजिट कर सकते हो. आई सेड ओके. तो ही सेड कि आपको ये ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तो हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, आप उस पर आपको लिंक आएगा और उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी, मेरे से उन्होंने पहले पेशेंट की डिटेल्स मांगी और टाइमिंग्स मुझे बताए. तो आई सेड ओके ठीक है. तो उसने दूसरे नंबर से भेजा कि मैंने आपको पेशेंट की जो आपने डिटेल्स दी, मैंने उसके अकॉर्डिंगली आपको एक प्रिस्क्रिप्शन रेडी करके भेजा. आपको सिर्फ लिंक ओके करके एंड उस पर से प्रिस्क्रिप्शन आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा. आई सेड ओके, बिकॉज मुझे आइडिया ही नहीं था कहीं ना कहीं से कि हाँ ये कुछ फ्रॉड होगा, बिकॉज आई हियर्ड अबाउट इट
बट ऐसा नहीं था कि मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड ऐसा होगा, बिकॉज एक मेरी फ्रेंड से जिससे बात हुई थी उसने बोला कि मतलब जो टाइमिंग्स मुझे मेरी फ्रेंड ने बताए, सेम एग्जैक्टली टाइमिंग्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के जो थे वो उस बंदे ने भी फ़ोन पर बताए। तो लिंक जैसे ही आया और लिंक पे क्लिक करने के बाद विदिन 5 to 7 seconds ही सेड कि मुझे आपको 5 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे अपॉइंटमेंट के। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, बट मुझे मतलब फिर भी कहीं ना कहीं तक ये आइडिया नहीं था कि इस तरीके से कुछ हो सकता है। एंड ऑब्वियसली आई नो कि OTP और ये कुछ भी शेयर नहीं करना होता, दैट तो आई नो। बट जैसे ही वो लिंक पर मैंने ओके किया ना, तो कुछ टाइम के लिए मेरे फ़ोन में से कुछ भी मैं टच कर रही थी तो वो वर्क नहीं कर रहा था और वो कॉल ही सिर्फ चल रहा था मेरे फ़ोन पर। तो जैसे ही मतलब मेरे पहले ICICI से 5000 डिडक्ट होते हैं एंड सेकंड डिपॉजिट मेरा दूसरे अकाउंट से होता है और सेकंड फिर अमाउंट मेरा 49,000 का सेम अकाउंट से होता है। एंड थर्ड जब हुआ तो विदिन 5 to 7 seconds में जो हुआ ना, तो जब सारा अमाउंट डिडक्ट हो गया, देन आई रियलाइज़ कि ओके, देन वो तभी भी वो कॉल पर ही था। एंड मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप क्या कर क्या रहे हो? तो कहते कुछ नहीं, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको भेजा ना, आपने डाउनलोड कर लिया ना। तो तब तक ऑलमोस्ट ये जितनी कन्वर्सेशन हुई उतनी देर में सारे पैसे डिडक्ट हो चुके थे मेरे अकाउंट से। Now everybody, Jiten, knows that there are scamsters out in the prowl, and yet so many smart people around me are actually falling prey. Recently, I received on Twitter a direct message from a verified account of a chief minister, I shan't name him, of one of our important states, and he said, "Apna number bhejo." So I thought maybe he wants to speak. So I sent the number, and then came a link, and I figured very quickly that this looks like trouble. But there are so many people who are actually falling prey, and especially when there's a scam like a OTP number bhejo, Amazon ke package ki delivery hai. You imagine, yeah, maybe I ordered something, maybe the guy needs an OTP, and voila, there's an OTP in your phone, and you feel okay, it's only logical to give it, and only later do you realize that you've been scammed. What should we be doing, Jiten? Rahul, we saw, wholesale scams happening in the name of Aadhaar, PAN linking, bank calling you for verification, Amazon calling you for delivery. But you see, these scamsters also innovate every day. From last 2 weeks, there is a new scam which is happening. People are calling from on the name of telco companies that, do you want to upgrade to 5G? Your connection has been, selected for 5G approval free of cost. So usme fraud ho raha hai. I mean, 2 days back, a lady was conned by somebody claiming to be a Russian cosmonaut in International Space Station who didn't have money to return to Earth. Right, and she paid money. Yeah, but she should have been more careful. वो थोड़ा दूर वाला थी, वो थोड़ा लगी रहा है कि गड़बड़ है. हाँ, तो you can patch everything, you can secure everything, but there can never be any patch for human stupidity. तो वो तो careful होना पड़ेगा. Rahul, the problem is, you see, in India, in the last 7 to 8 years, the speed at which we have digitalized our economy, public services, probably at the same speed we have not been able to impart digital hygiene and cyber education to our citizens. So our cyber security system, especially in law enforcement, is completely collapsing. Today, my dear friend Triveni Singh is also here. He could tell you that 90% of the cybercrime complaints are because of OTP frauds and small-time financial transactions, which are happening even with educated people. And Rahul, and दूसरा आपने देखा होगा Rahul, our system is literally, it's not that we are ignorant, we have done indifferent. I could remember 2 years ago, you did a show on Chinese loan scam apps, right? Still today it is running, we are seeing in every news channel. So probably our system is not able to respond effectively, and it is not because of their fault. It is equally because of the process of society and lobbies. I think if you look at this whole nexus, 2 things are critical here. A, people have been able to obtain fake SIMs and numbers to carry out frauds, and they're not getting blocked. 2, they've been able to obtain fake bank accounts. Now, these are not only happening because somebody is giving fake documents. They are renting accounts, Jan-Dhan accounts from poor people, telling them, "Aapko 10,000 rupees mahina milega, bas apna debit card or username password वगैरह दे दो." So now all this is happening because we have a broken KYC system. I think the time has come. Probably everyone in the society, I'm not going into Aadhaar debate, but probably I think Aadhaar today is the most effective means to do a biometric KYC of every account and every mobile number so that there is no fraudulent SIM issued on the name of anyone. And there is a complete track. Number 2, you see, India is probably the only country today where our banking and debit card or credit card transactions require a mandatory OTP, right? Nowhere in the bank, if you do on a foreign website, you don't require an OTP. You just give the card details and the money is deducted. Here, you require an OTP. So these number of frauds are, despite of OTP. Imagine if the OTP problem was mechanism and security was not there, the number of frauds would have been gigantically huge, not even imaginable. So what we need to do, A, we have to fix this whole broken KYC system. And second, I think one thing, Ministry of Home Affairs in last 3 months have done a wonderful thing. This 1930 helpline,
The moment you call, if you're able to give a bank account number or a number of SIM, they are immediately freezing the money for 48 hours. So earlier, the money was getting rotated and withdrawn in 4 hours, 5 hours, and there was no way to recover money. Now your money, that fraudulent account is frozen for 48 hours immediately without any police complaint or a formal complaint. As Karnal Singh sir was rightly pointing on, that 48 hours gives you a window to go to a police station. You can go to cybercrime.gov.in. So that's number one. Now, second thing, I think, we can blame government. We can say that probably our citizens lack digital hygiene and literacy, but somewhere down the line, I think these private companies like Google and Facebook are equally responsible. I think one of our fellow panelists was saying that she saw an ad on Google. I mean, Google में ad free में नहीं जाता राहुल, पैसे देने पड़ते हैं. So if you are giving somebody's ad and that person is posing to be SDFC Bank or some, a hospital, and Google is taking money from them without any KYC or figuring out who's paying money. So you see, Triveni ji can tell you, Google insurance company number, fraudulent ad are showing, which are showing fake helplines. People are calling it and then they get conned. So somewhere down the line, these intermediaries, like Google and Facebook or Amazon have to also be equally responsible that the kind of ads which are shown, if they're showing fraudulent numbers and people are getting conned, somewhere down the line, accountability has to be there. Professor so in Triveni is saying, I think the fundamental solution is the police lax. If, for example, this is happening in a big way in a place like Jamtara, and I've been to Jamtara for election coverage in Jharkhand, and it's those bunch of people. When we were driving in a taxi, looking out, a taxi driver says, you see those people under the tree, they're the ones who, they're amongst the ones who run these online scamming rackets which happen out of Jamtara. If everybody around that area knows who these people are, how is it that our law enforcement agencies aren't able to do more? देखिए, जहां मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, हमारे यहां से कई बार टीम जामतारा एरिया में गई है और जामतारा से हम लोगों ने काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया है। फैक्ट ये है कि इसके पीछे मूल कारण ये है कि हमारी अवेयरनेस कम है। लोगों को 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर 2-3 चीज़ें, इतने डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम डर करके ऑनलाइन बैंकिंग छोड़ दें या हम इस तरह के वॉलेट बनाना छोड़ दें या ई-कॉमर्स छोड़ दें। डरने की भी ज़रूरत नहीं। 2-3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा पैसा जाएगा तो OTP या तो मैंने शेयर किया या हमसे कोई एप्लीकेशन हमारे मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कराया गया और उस एप्लीकेशन के थ्रू रिमोट एक्सेस मेरे मोबाइल फ़ोन का ले करके OTP रीड कर लिया। 2 ही सूरत में हमारा पैसा जा सकता है। तो ये बार बार बैंक की तरफ से भी मैसेज आ रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पेपर में बाकायदे एडवाइजरी जारी करती है। हर बार हम लोग बताते हैं कि आपको OTP नहीं शेयर करना, आपको अपना आधार कार्ड का नंबर नहीं शेयर करना, पैन कार्ड, ये सब जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ये नहीं शेयर पर आप बोल रहे हैं OTP शेयर नहीं कर रहा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर। एक सेकंड। जैसे मैं एक न्यूज मीटिंग में बैठा हूं, मुझे फोन आया कि भाई आपका Amazon से पैकेट आया है और हाँ, मैंने पैकेट ऑर्डर भी किया था और डिलीवरी भी एक्सपेक्टेड थी कि अभी डिलीवरी आने वाली है। उन्होंने बोला कि OTP दीजिए, हम गार्ड के पास छोड़ जाएंगे। तो मैं तो देने ही वाला था OTP। अब ये भी तो इनको कैसे मालूम कि मैंने कब पैकेट ऑर्डर किया, कि ये पैकेट आने ही वाला है। इसके अंदर तो बहुत डीप रूटेड मिलीभगत इन्वॉल्व है ना। उनको मालूम है कि there is a problem there. Sir, there is the point that Jitin is making. There is a serious data leakage problem here. I am expecting, I know I've got an email from Amazon saying that I'll receive my packet between 9 and 12. Just in that window, I get a call. I've got a message from a number that looks like Amazon, which has my OTP. I get a call just at that moment कि अपना OTP. So it looks all real. देखिए, डेटा ब्रीच जो है बहुत ही सीरियस इशू है इंडस्ट्री में, कारपोरेट्स में। जितने हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ढेर सारे रेट्स में, इवन हम लोग के कंसल्टेंट भी हैं। आप ये जानते होंगे कि डेटाबेस इतना सीरियस इशू है यहाँ कि आप ई-कॉमर्स का डेटा आप जाइए, डेटा वेंडिंग मार्केट से वहाँ पे आप खरीद सकते हैं। आप डार्क वेब पे ढेर सारा डेटा पड़ा हुआ है। और ये जो आप फ्लिपकार्ट की बात करा रहे हैं, इस तरह के केसेज हमारे पास आते हैं। आखिर वो इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल के पास कैसे तुरंत पहुंच जाता है कि आपने डिलीवर किया है, आपकी कोई डिलीवरी आने वाली है या आपके पास ट्रांजेक्शन क्या है। तो ये निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि डेटा लीकेज, डेटा ब्रीच ये बहुत ही सीरियस इशू है। और जितने भी ई-कॉमर्स पोर्टल है और जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसको साइबर सिक्योरिटी को सीरियसली लेना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग अपना ड्राइव जो है कारपोरेट में भी जाके हम बता रहे हैं कि आप साइबर सिक्योरिटी देखो, आप अपने को सिक्योर करो, अदरवाइज आपका डेटा जो है मार्केट में जाता है और उसी डेटा पे खेल करके साइबर क्रिमिनल्स लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और साइबर क्राइम हो रहा है।
Okay, Deepthi Gupta, why don't you tell us what are the lessons that you learned, what happened with you, and what's your advice to those who are watching at this time to ensure that they don't get scammed? Yes, sir. So I'm a teacher by profession. So I've taken break from my job. So I was searching for the part-time jobs. So I've received a message from like Amazon, because उसपे लिखा था कि this is message from the Amazon. So I've received that message कि we need part-time employees. So I've thought कि चलो देखते हैं कि part-time job I'm looking and Amazon है तो definitely मुझे करना चाहिए. So I messaged on that number, or one number was shared in that message. So I've clicked on that, I messaged on that number. So some random girl, just picked up the call and said कि मैम आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं. आई वाज लाइक येस. सो उसने मुझसे पूछा, मैंने उनसे पूछा कि किस तरह का काम है, आप मुझे डिटेल बताइए. सो शी वाज लाइक कि आपको कुछ हमारे अमेजोन की साइट है, आपको पता ही है कि अमेजोन की साइट है. सो इट्स अ बिग ब्रांड. So you have to buy some products from our site and you will get the commission, and with you will reimburse your purchase value too. So I was like okay, let's do it. So उसने first day तो सर 2 से 3 टास्क दिए, and first day I've got my commission of 700 rupees. और उन्होंने कहा कि मैम आज के लिए इतना बहुत है, कल हम फिर से करेंगे टास्क. सो सेकेंड डे जब मैंने उस टास्क को करना शुरू किया, सो शी वाज लाइक कि मैम अब आपको जो है आगे गाइड करेंगे, आपको एक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है. सो आई हैव डाउनलोडेड दैट ऐप, और उसने मुझे लिंक किया कि कोई धीरज ऐसे पर्सन है, वो आपको आगे गाइड करेंगे. सो धीरज का मैसेज आता है टेलीग्राम पर, एंड ही आस्क्ड मी टू आज कि आपने कल जो किया था आपको वही कंटिन्यू करना है. एंड ही सेंड मी अ लिंक एंड इज लाइक कि प्लीज इस लिंक पर चले जाइए और आपको परचेज करना है. अब उस कल के 3 टास्क के मुझे लगा पैसे मिल गए हैं. सो आई वाज लाइक कि ओके मिल जाएंगे ये वाले पैसे भी. लेकिन नेक्स्ट डे जो परचेज अमाउंट था वो बढ़ता चला गया, और वो बढ़ते बढ़ते सर वो अमाउंट जो था, आफ्टर ईच एंड एवरी टास्क आई वाज आस्किंग कि आई वांट टू लीव दिस बिकॉज द परचेजिंग अमाउंट इज इंक्रीजिंग. सो ही वाज लाइक कि नो, आपको ये टास्क करना पड़ेगा, इसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे, ये टास्क करना पड़ेगा आपको, इसके बाद पैसे मिल जाएंगे. एवरी टाइम आई वॉज जस्ट मेरी मनी बस लग रही थी, मुझे मिल कुछ नहीं रहा था. एंड एवरी टाइम ही वॉज प्रेशराइजिंग कि नहीं आपको ये टास्क कर लीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे, देखिए आपके पैसों पर आपको कितना सारा कमीशन मिल रहा है. तो इस तरह करते करते सर वो जो पेमेंट थी दैट इंक्रीजेज अप टू 1 लाख. और उसके बाद मुझे समझ में आ गया जब इतने पैसे चले गए कि अब ये मुझे पैसे मिलने वाले नहीं हैं. Here's the problem, Karnail Singh. बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरी मनी, that A, people don't get their money back, B, it's too late by the time they realize that there's a scam that they've been conned by, and the fact that there is a data breach that happens at some level which makes it seem real. If you've ordered an e-commerce packet, that packet is to reach at a certain time, that's just when you get a message with an OTP, you tend to think maybe, and it's got the name of that e-commerce company on top, it all seems so believable. What more can law enforcement do so that people aren't conned in this way, Karnail Singh? Creation of the basically awareness. Okay. We are hopeful that government will bring out the data privacy bill in the next session. They said that they are going to introduce in the next parliamentary session, because you are talking about the data breach, that is very, very important area. And if my transactions data is known to the fraudsters, maybe certainly there are some insiders are involved in that, who are passing on the information. So we have to go, law enforcement agencies have to go even after those people, that how these people are getting information. That area is perhaps missing or not being investigated thoroughly. Secondly, Jiten Jain told about the search engines also. One should be careful about the search engines, because these fraudsters are able to give ad on the search engines, and you are looking for the job or you are looking for the hospital record, and you get that information, and
For this, the search engines must be made responsible. That how is that possible? In your search engine, the person is getting the wrong information of the hospital or something. Thirdly, the immediate complaint is very, very important. 1930, like Jiten told, the complaint on the government cybercrime.gov.in informing the bank, and this is able to withhold a lot of money through whenever the complaint is made to the 1930 number. So that is a possibility. And this is a fight between the criminals and the law enforcement agencies and the people. All three have to combine together and then work against it. Okay, I'll leave it over there. Our whole hope was to try and bring this issue, which is happening to individuals across the country, into national consciousness. Jiten wants to make a quick point before I wrap up. How should people ensure they don't get conned beyond what is obvious, which is to be vigilant? Rahul, while we expect our citizens to be more digitally literate and not fall for such scams and expect government to do more, especially on the law enforcement side, I think we as a society must now make up our mind that whatever we discussed in last 1 hour, 80% of these victims of cases which are not even reported in the systems are those small, poor farmers and people of the last leg of society which are conned by 3,000 rupees, 4,000 rupees. They don't even know where to go and complain. So for them, in their larger interest in mind, let us as a society collectively put national interest over our, policy differences. Allow government to have a very strong KYC mechanism, number one. Two, whenever government wants that these private companies should have a nodal officer or a grievance officer in India, when the previous IT guidelines came in, a lot of people said that government is trying to arm twist. Why are they asking Twitter, Google, or to have a local, grievance officer in India? But see, this is what happens. That if you do not, Google is running fake these Chinese loan app scams on their Play Store. Nobody is responsible. Multiple people make fake wallets. Nobody is responsible. So if these companies are forced to have a presence in India under a strong redressal mechanism, I think it will serve the larger interest of our society, especially the interest of the poor people at the last leg of our society. Okay, so you've shared your point of view. There are certain aspects of privacy concerns which also come up when there is so much KYC and everything is linked. Do I want to make that kind of information available, especially when I know that Big Brother could be watching? So we leave that debate for another time. But till then, be vigilant, be careful, and don't give OTPs unless you're 100% certain that you know who you're giving it to and why. A sensational human sacrifice case in Kerala, women chopped, cooked, eaten. Details will shock the nation coming up on the other side. Hey, I noticed something new. You started using a new body lotion. Fun. I'm so sorry for the delay. I was on another call. It just kept going on. No, Papa. You are in a steam bath. Steam bath? At home? 2 steam bath he takes. Go to your homework. It's 7:20 already. The kickoff's in 5 minutes. Get on the boys. We have the entire place to ourselves, man. Not working? Of course it is. But I don't want you guys to be using this bathroom. So use the other one. Armed with facts, she takes the news by its horns. You think the future of these students are not hampered? Fierce, bold, and direct, setting the tone for the biggest stories from every corner and every angle. Expect nothing
but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today. Pet dogs and their owners are in the news amid a string of incidents involving pet dogs attacking owners and others. And to curb such incidents, here are some approaches that pet owners should take based on the breed and behavior. Tonight at 9 p.m. on the News Today with me, Rajdeep Sardesai. Saurav Ganguly, out of the race to become the next BCCI president, has sparked off a political war. The Trinamool Congress claims that this is a conspiracy against Bengal because Ganguly refused to toe the line of the BJP. What's the real story behind Ganguly out of the BCCI? That's going to be a big talking point on the News Today. Also, our big newsmaker tonight, the man who's front runner to become the next Congress president, Mallikarjun Kharge, will be joining us. Will he be remote controlled by the Gandhi family? We'll ask him that and much more on the News Today. Kidnapped, killed, bodies chopped off, cooked and eaten. These are murky details of occult killings that have rocked Kerala. A couple, at the behest of a tantric, sacrificed two women, apparently to get rich. Superstition, perversion and cannibalism. This is no fictional crime thriller. Shibimol reports on this horrific story that has stunned India. This is Kerala's House of Horrors. Located in Pathanamthitta, this is where Bhagaval Singh and his wife Leila carried out the human sacrifice of two women, Padma and Rosalind, all at the behest of a self-proclaimed tantric, Shafi. The sinister occult killings were planned in 2020 when Shafi, impersonating as Sridevi, lured Bhagaval and asked him to meet the tantric. The tantric Shafi himself then promised to make Bhagaval and his family rich. All they had to do was perform human sacrifice. It was in June this year that Rosalind was taken to the couple's house in Pathanamthitta. She was brought on the pretext of acting in porn films and was offered 10 lakh rupees. When she reached Bhagaval and Leila's house, her hands and legs were tied to a bed. She was told it was a part of porn film shoot. Leila then inserted a knife into Rosalind's private part and slit her throat. Leila's husband, Bhagaval, then cut off her breasts. The couple, along with Shafi, then chopped Rosalind's body into pieces and buried them in a hole. നമ്മുടെ മെയിൻ ഇതിലെ ഡിറ്റക്ഷനിലേക്ക് എത്തിയത് ആദ്യത്തെ എഫേർട്സ് ഫോക്കസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് CCTV ഫുട്ടേജാണ്. എലംകുളം ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ സ്ത്രീ മിസ്സിംഗ് ആയത്. ഈ CCTV ഫുട്ടേജ് ആൻഡ് ദ സ്കോർപിയോ വിച്ച് വാസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ സ്കോർപിയോ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ലെഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് അക്യൂസ്ഡ് മിസ്റ്റർ ഷാഫി അലിയാസ് റഷീദ്. A month after Rosalind's murder, Bhagaval and Leila contacted Shafi again. They asked him when will they get the wealth. This time, the tantric told the couple that one more sacrifice was needed. So, Padma was brought in. This is her walking towards Bhagaval and Leila's house the day she was murdered. Padma was lured on the pretext of sex work. She was promised 15,000 rupees. She was then strangulated with a plastic rope. Shafi then inserted a knife in Padma's private parts and slit her throat. Her body was then chopped into 56 pieces. Basically, he is a sexual pervert. Sexual pervert including sadistic pleasure, causing injury, causing harm, even death. സെക്ഷൽ പെർവേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഒരു സേഡിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെജർ എടുക്കുന്ന ആളാണ്. ആ സേഡിസ്റ്റിക് പ്ലെജറിന് വേണ്ടി എന്ത് സ്റ്റോറി വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും, ആരെ വേണമെങ്കിലും ഇയാൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും. The horror didn't just end there.
Bhagaval, Leila and Shafi would sprinkle the blood of the victims inside the house. The police are probing cannibalism allegations too. It is reported that the couple cooked the victims' body parts at the instruction of the tantric. ഇതിന്റെ മാംസം ഇവർ കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു, പാചകം ചെയ്ത് കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അത്തരമൊരു മൊഴി അവരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ എവിഡൻസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കാരണം അത് ആദ്യത്തെ കാലടി ഇൻസിഡന്റിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി എവിഡൻസ്. വി ഹാവ് ടു ഡു DNA അനാലിസിസ് ഫോർ ദാറ്റ്. Leila has told the police that she is depressed and has been under medication. But what explains such depravity? It was here where Shafi, Bhagaval Singh and Leila carried out the occult killings. The sensational double murder has not just done Kerala but the entire country. All three accused has now been sent to judicial custody till October 26th. Bhagaval Singh and Leila will now be in jail. With video journalist Tinku Rajashekar, Shubhimol KG for India Today from Pathanamthitta. This is where I wrap up the Newstrack tonight. For your time and your trust, thank you very much. I look forward to seeing you 8 p.m. tomorrow evening. Till then, from all of us here, goodbye, good night. Hey, I noticed something new.